Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are reading Oxford Modern English Book 6. Today we will learn Unit 6, The White Mouse Circus, written by Roald Dahl. Here you can see in a picture there is a boy and an old lady. First of all, I am giving a short intro of this story. The story is about a young boy and his encounter with witches. The boy who lives with his grandmother is due to spend his holidays in Norway. But because his grandmother falls ill, so they can't go. Instead, he is taken to a seaside hotel in England. Now let's start the text of this story. Rooms were booked. Book mean reserved, महसूस करा लेना. Rooms were booked, कमरे महसूस करा लिए गए थे for us, हमारे लिए, in a place called the Hotel Magnificent. होटल मैग्निफिसेंट नामी एक जगह में, in the famous seaside town of Bournemouth. Seaside, located along the sea. Its main is Sahli Ilaka. It's called noun. As you know, noun is the name of a person, place or a thing. So it's a place. बर्नामाउथ के मशहूर साहली कस्बे में हमारे लिए होटल मैग्निफिसेंट नामी एक जगह में कमरे महसूस करा लिए गए थे. बर्नामाउथ, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी दादी ने मुझे बताया, वॉज फुल ऑफ ओल्ड पीपल लाइक हर सेल्फ, इनके जैसे बूढ़े लोगों से भरा पड़ा है. दे रिटायर्ड देयर बाय द थाउजेंड्स, वो हज़ारों की तादाद में रिटायर होकर वहाँ जाते हैं. बिकॉज द एयर वॉज सो ब्रेसिंग एंड हेल्दी इट केप्ट देम. Bracing means refreshing, कुव्वत बख्श. Earth class is adjective. As you know, adjective is a word that describes a noun. क्योंकि उनका ख्याल था कि वहाँ की हवा इतनी कुव्वत बख्श और सेहतमंद थी कि इन्हें so they believed, और उनका यकीन था, alive for a few extra years, कि वो इन्हें चंद सालों तक जिंदा रखती थी. Does it? I asked. मैंने पूछा, क्या वाकई ऐसा है? Of course not. यकीनन नहीं. She said. उन्होंने कहा. It's tomrot. ये एक nonsense, फजूल बात है. Tomrot, utter foolishness, or you can say nonsense. Fazul baat, its class is noun. But just for once, I think we have got to obey the doctor. But हम इस बार के लिए बस मेरा ख्याल है कि हमें डॉक्टर का जो हुक्म है वो मानना पड़ेगा. Soon after that, इसके बाद जल्द ही, my grandmother, मेरी दादी, and I took the train to Bournemouth, और मैं रेलगाड़ी में Bournemouth पहुंच गए, and settled into the Hotel Magnificent. Settle mean कैंपज़ीर, और होटल मैग्निफिसेंट में कैंपज़ीर हो गए. As you can see in this picture, there is a white building of the Hotel Magnificent and the young boy and his grandmother moving towards the hotel. It was an enormous white building on the seafront. Enormous mean very large, बहुत बड़ी. ये एक बहुत बड़ी सफ़ेद इमारत थी on the seafront, साहले समंदर पर, and it looked like a pretty boring place. Boring place means उकता देने वाली जगह, उकताहट अंगेज जगह. It looked like a pretty boring place to spend a summer holiday in. गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ये एक उकताहट अंगेज जगह नज़र आ रही थी. I had my own separate bedroom. मेरे पास मेरा एक अलग बेडरूम था. Separate means अलग. But there was a door connecting my room with my grandmother's room. लेकिन मेरे कमरे को दादी के कमरे के साथ एक कनेक्टिंग डोर था जो दोनों रूम्स के साथ मुंसलिक था. Just before we left for Bournemouth के रवाना होने से पहले, my grandmother had given me, मेरी दादी ने मुझे दिया, as a consolation. Consolation means a source of comfort. दिलजोई करना, दिलासा देना. Its class is noun. बोर्नमाउथ रवाना होने से पहले मेरी दादी ने मुझे दिलासा दिया. A present of 2 white mice in a little cage. Present means a gift, तोहफा. Of 2 white mice, 2 सफ़ेद चूहों का, in a little cage, जो पिंजरे में बंद थे. And I took them with me, और मैं इन्हें अपने साथ ले गया. Where? On the Hotel of Magnificent.
They were terrific fun. Terrific means a great player, and or you can say terrific fun, a source of enjoyment. I called them William and Mary. मैंने उनका नाम विलियम और मैरी रखा. And in the hotel, I set out right away teaching them to do tricks. होटल में मैंने उन्हें फ़ौरन नए नए करतब सिखाना शुरू कर दिए. Tricks means करतब. The first trick I taught them, जो पहला करतब मैंने उन्हें सिखाया, was to creep out the sleeve of my jacket and come out of my bag. Creep means रेंगना. अपने जैकेट के बाजू में से घुसकर अपनी गर्दन से बाहर निकलना सिखाया. Then I taught them, फिर मैंने उन्हें सिखाया, to climb up the back of my neck on the top of my head. Climb means चढ़ना. मैंने अपनी गर्दन की बैक से ऊपर चढ़ना सिखाया on to the top of my head और अपने सर तक पहुंचना सिखाया. I did this by putting crumbs in my hair. Crumbs means रोटी के छोटे छोटे टुकड़े. मैंने ये करतब उन्हें अपने बालों में रोटी के छोटे छोटे टुकड़े रखकर सिखाया. Thank you for watching this video. We will meet soon with remaining part of this story.